but learning Linux is not easy uh, because it requires a lot of practice and dedication. With mobile phone, you cannot practice, so it's always preferable that you guys attend from your laptop or your PC. So let's wait for 10-15 minutes, and while you guys reach college, and then we can start lecture. So earlier we had only the online batch that we have conducted, but this time I'll be also visiting college and conduct your lecture there as well. So hope to see you guys all in the coming weeks at college as well. So it will not be always offline, but yeah, it will be hybrid, online plus offline. ओके कितने लोग हैं जिन्होंने अभी तक लिनक्स इंस्टॉल ही रखा है एंड दे आर एबल टू डू some some work on Linux. Okay, Neer, Shakti, cool. Amit, Kinjal, Dhanraj, Raja, cool. Hello, sir. Yes, Aditya. Sir, my question is about मैं Mac यूज कर रहा हूँ और जैसा आपको पता है Linux और Mac का जो बैकग्राउंड है वो यूनिक्स है, तो ऑलमोस्ट सारे Linux के कमांड Mac में चलते हैं, तो वो करना सही रहता है यार? Mac you can use, but Mac में ना थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम ये आएगा कि Linux related कमांड्स चलते हैं, बट एग्जैक्टली लिनक्स के कमांड्स नहीं चलेंगे. सो या कुछ और चीजें हैं वो नहीं चलेंगी. So what we will do is I will show you the two installation methods. One is on a on your local system, and the other one is on a cloud machine. So we will also see like कि हम cloud के अंदर कैसे अपना एक सर्वर क्रिएट करें एंड उसको हम यूज करें. लेकिन उसके लिए ना आप लोग को क्लाउड के अंदर एक अकाउंट क्रिएट करना रहेगा. दैट अकाउंट हैज टू बी that account has to be uh, that account has to be created from using your credit card or debit card. Can or use AWS that Cloud. AWS Cloud. So AWS Cloud के अंदर हम एक नया अकाउंट क्रिएट करेंगे एंड उसके अंदर आप लोग को एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट करना रहेगा, which would be free for next 12 months from the date you create it. So अगर आपको सिंपली क्या करना है, वो जस्ट एक अकाउंट ही क्रिएट करना है और एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट करना है एंड बाकी और ज्यादा कुछ चीजें उसमें आपको ट्राई नहीं करनी है. So with that approach, you will get EC2 instance free for 1 year.
Just on a local system. अच्छा, कितने लोग हैं जिनके पास अभी लोकल सिस्टम अवेलेबल है और दे हैव एक्सेस टू? ओके, कूल। जय, हर्ष, अमित, जय। ओके। Now you all have reached college or still in the bus? Just give me one quick moment. I'll be back. Okay, guys. So I'm back here. So सबसे पहले जो है ना, वो हम जो इंस्टॉलेशन मेथड देख रहे हैं, that would be based on कि AWS क्लाउड के अंदर हमें कैसे अकाउंट क्रिएट करना है एंड कैसे उसके अंदर EC2 इंस्टेंस क्रिएट करना है, जो कि 1 साल के लिए आपको फ्री रहेगा। आपको उसमें और ज़्यादा कुछ चीज़ें या और ज़्यादा कुछ चीज़ें ट्राई आउट करने की नीड नहीं है। लेकिन कल के क्लास से पहले आप सब लोग के पास ये सब कुछ चीज़ें रेडी होनी चाहिए without any excuses. So I will show you two methods of installation Linux. One is through EC2 instance, जो जो कि ये है कि आप कहीं से भी कनेक्ट कर सकते हो, and the other one would be like installing on your local system. So इनमें से दोनों मेथड में से आप कोई भी ट्राई आउट कर सकते हो, whichever is comfortable to you. But honestly, this time no one would be the guy जो लिनक्स सीखेगा और बट लिनक्स पे काम नहीं करेगा। लास्ट टाइम अगर डिप्लोमा में किसी ने ऐसा किया था तो दैट्स हिस्ट्री नाउ, बट अब ऐसा नहीं करना है हमें। सो let me share my screen and I can show you how to perform installation. So पहली चीज ये है कि आप लोग को ना AWS का अकाउंट क्रिएट करने के लिए you should have either a debit card or a credit card
and the debit or credit card that you might be using should only be a Visa or a Mastercard. रुपे कार्ड नहीं चलता है. So please bear that in mind. Yes, Pratham, can you allow screen sharing for me? Yes, sir, I do. Okay. Sir, now you can share the screen. Okay. Okay. So so सबसे पहले आपको क्या करना है? You have to log in on your you have to go on to console dot you have to go on to console.amazon.com or simply aws.amazon.com. आपको ये वेबसाइट पे जाना है सबसे पहले. The very first step is create an AWS account. Okay, and the very first step is go to this URL. Let me know if my screen is visible to all of you. Screen visible, like guys? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So उसके बाद आपको क्या करना है? If you don't have an account before, तो आपको क्या करना है? My account में जाके click on AWS Management Console. So AWS Management Console पे जब आप आओगे, तो here you have an option create a new AWS account. Okay. So आपको क्या करना है? Create a new AWS account पे click करना है. Under my account, click on AWS Management Console and the console page. Click on create a new AWS account. Okay. Sir, could you please send this aws.com link in the chat box? Yeah. I'm not getting exactly from the Google. Okay. Thank you, sir. Got it, Or sir. you Thank you. can, or you can simply use this URL.
ओके, सो आपको क्या करना है, क्रिएट अ न्यू AWS अकाउंट पे क्लिक करना है एंड यू हैव टू कंप्लीट दिस साइन अप प्रोसेस। आपको यहाँ पे एक ईमेल एड्रेस ऐड करना है। अगर आप लोगों ने पहले अकाउंट क्रिएट किया था AWS का, जब आप लोग शायद क्लाउड या फिर लिनक्स सीख रहे थे, तब अगर आपने क्रिएट किया था तो वो यूज नहीं कीजिएगा, बिकॉज दैट माइट बी मोर देन 1 ईयर ओल्ड। तो अगर 1 साल से ज्यादा हो गया है उस अकाउंट को, तो प्लीज डोंट यूज दैट, क्योंकि नए अकाउंट के लिए EC2 इंस्टेंस फ्री रहता है फॉर 12 मंथ्स। ओके, तो अगर 12 महीने से ज्यादा, 12 मंथ से ज्यादा हो गया है, तो यूज अनदर ईमेल एड्रेस। तो आपको यहाँ पे आपका खुद का ईमेल एड्रेस सेट करना है एंड यू कैन give any AWS account name. Okay, and then you have to click on verify email address. So मेरे पास already एक account है, so I'm not going through this complete process, but can anyone share, किसी एक का account create करना हो, तो can anyone share his or her email address so I can walk you through this process? Yes, Neer, you want to try? Dhanraj, Neer, Vishwa, Shruti, Army. Okay. Okay, Jean. Putting your email address here, and the AWS account name is Jean. Okay. So when I click on verify email address, you will get an verification code on your email address that needs to be provided. So if you can share me your verification code, you can send me on one-to-one message as well. Yeah, but you can share it. So आपको all of you have to follow this process in order to create your AWS account. अच्छा, आपको आपके डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड में से डायरेक्टली कोई चार्ज डिडक्ट नहीं होगा, बट इफ यू गाइस बाय एनी चांस आपको अगर उसमें चार्ज लगता है, तो डोंट वरी अबाउट दैट. We have some method by which we can get your account as a free of charge. So अगर किसी को चार्ज लगता भी है तो भी टेंशन लेने की बात नहीं है. One thing is कि it is not going to deduct directly from your account. So वो automatic deduction नहीं होगा. So don't worry on that part. Okay. So click on verify. Now this root username and the password has to be set for this account. So I am setting some password, and Jean, I'll share it with you on WhatsApp. Okay.
continue. Once you have set the password, then next step is to continue. Okay, so you will get this page for signing up. Okay, Jean, your username and the password is set. So what I will do is I'm sharing this it with you, so you can try login now at your end, or you can fill up this information and process the further steps. Jean, you are in WhatsApp group. Yeah, Jean, you are in WhatsApp group or not? Yes, sir. Okay. Can you, what's your name or things that I can identify you in that group? Yes. Okay. Jean, you, okay. Now I got you. So here is your password. I've shared you on WhatsApp. You can log in. Okay, Jean, I have shared you the password, so you can log in using and complete the rest of the process. So यहाँ पे ना guys, आप लोग को क्या करना है? You have to fill up this form, and uh, in the next step, you might be asked to provide your uh, in the last step or in the next step, it will ask you for a debit card or the credit card details. So debit card or credit card should have to be either a MasterCard or a Visa card. Otherwise, Rupee card is not supported. So uh, please create your account with one of that account. Once you are signed up, once you have done the sign up, you can now go back onto console.aws.com and log into your login with your root email address. Okay. So I have already created my account, which is and the email address is cloudlearning1905 at gmail.com. So this is my account.
and I need to log in. Yes. Okay, once you are logging into your AWS account, you might be landing up in a AWS console where you might not be seeing these recently visited services or anything like this. So don't worry on that part if you don't see anything on the landing page. Okay, but landing page में यहाँ पे आपको एक ड्रॉप डाउन दिखता है. So whatever यहाँ पे ये जो है ना, this shows as your region. मतलब यहाँ पे ना आपको रीजन दिखता है कि आप अभी कौन से रीजन में हो. So AWS is different region. So whatever region you are in, it's completely fine. Try selecting North Virginia or Mumbai. Asia Pacific में मुंबई रहेगा. So select anyone between these two. But जिसमें भी आप create करते हो, make sure कि आप वही वाला region every time पे use करो. Okay. So AWS का instance create करने के लिए आपको क्या करना है? First, in the search bar, you just type as EC2. So if you type EC2, you will get this service named as EC2, which is called as a virtual servers in the cloud. Click on EC2. Okay, you will get uh, the page EC2 dashboard, something like this, and you just go click on instances. The next step is to click on instances. So I have already one server which is running. That's fine. So what you need to do is you need to create another server, or you need to create a new server. In your case, in your fresh account, there will be no server. So what you need to do is you need to create one new server. So simply click on launch instance. Okay. So when you click on launch instance, you will get this page for creating a new server. Okay. So first of all, give the name of the server. So you can give the name as a Linux training. Okay. Linux -training or whatever name you want to give, you just give that name. And the next step is to application and OS images. This shows you the application and the OS images, which is called as an Amazon Machine Image or AMI. The short form is AMI, and we need to now select the AMI. I mean, AMI is what we need to decide कि हम कौन सा operating system use करेंगे. So what we will be doing is we will be learning on CentOS. So we need to install CentOS. Okay. So how we can get that CentOS image? By default, if you see, you don't get CentOS image. Even if I type here as a CentOS, you might not be getting it. Okay. So what we need to do is, we need not to select any image from here. Rather, what you need to do is click on browse for more AMIs. Okay. And under browse more AMIs, you just need to go into AWS Marketplace AMIs. Okay. Just go to AWS Marketplace AMIs and type the name as CentOS 7. Okay, CentOS 7 and hit enter. So you will get CentOS 7 images, and the very first image is CentOS 7 with updates HVM, and this would be the image that you need to select. Okay, and this is official CentOS
image. Okay, so you need to just click on CentOS image, and this is under AWS Marketplace AMIs. Okay, you just select this one, and it says free tier, and just click on continue. Okay, so now the Amazon machine image is set as a CentOS, which is taken from the AWS Marketplace AMIs. You can select this from by clicking on browse for more AMIs. Okay, now it says to select the instance type. This is very critical. Okay, you have to be very much cautious on this step. You need to select the instance which says free tier eligible. So free tier eligible is T2 micro. Okay, T2 micro is the instance type which is free for 1 year. It will give you 1 GB memory and 1 V CPU and 1 GB memory, and it's free for 12 months. Okay, so you need to just give the name, select this particular instance, and keep this select the instance type as a T2 micro, which is free tier eligible. The next thing is to create a key pair, and this key pair is used for login into AWS machine. So there is no username or the password for login into AWS machine. So you have to use the key pair in order to log in. So if you create a new account, you will not have any key pair. The very first thing is to create a new key pair. Okay, and from the key pair name, just give the name of the key pair. And this is very much important. And make sure you download this key pair. If you don't download, or if you have lost this key pair, then you can't log in to this AWS account. Okay, give the key pair name. So I'm giving as a ICT training. Okay, and choose the file format as RAM. Okay, and the key pair type is RSA. So you just open it and leave the default options. Okay, click on create key pair. So once you click the key pair, it will automatically ask you to download this. So you just download it. If you don't download it, or you have forget to download, or you have lost this key pair, then you can't log in into your AWS account. Under the networking setting, leave everything as a default, and it says this is a firewall which is called as a security group. So in AWS, nothing is allowed, everything is blocked. So if you want to allow any specific service or any specific communication to your AWS instance, you need to allow the traffic. By default, everything is blocked. So whatever port or whatever service you want to allow, you need to allow that into the firewall. Okay. So it says to allow SSH traffic from anywhere. So you just need to select this option. Okay. Don't select any other option, or you can also select this option as well. So choose only two options: allow SSH traffic from anywhere and allow HTTP traffic from internet. These are the two rules that you have to check mark. The next is to configure storage. By default, it is taking as a 10 GB, which is more than enough for us. So don't do any other things. These are the only things that we need to do. And the number of instances should be one only. So एक जो है ना वो आपको EC2 instance फ्री मिलता है. बेसिकली आपको जो EC2 instance है वो फ्री मिलता है
but that is for 750 hours per month. Okay, so अगर आप 750 hours में एक इंस्टेंस रन करते हो या मल्टीपल इंस्टेंस रन करते हो, that's your choice. बट जो भी आप इंस्टेंसेस क्रिएट करते हो या जो भी आप इंस्टेंसेस यूज करोगे, वो that should not exceed 750 hours per month, and it has to be T2 micro only. Okay, 1 GB, 1 vCPU and 1 GB RAM. So click on launch instance. It will launch the instance and it will be available to us in some time. Okay, so it says successfully launched instance of this instance. Now click on view all instances. In few moments, we will be seeing here another server. So we have to wait, like this instance state should turn into running, and this status check should come as a 2x2 checks passed. Okay, so we'll wait for a few moments while this instance comes into the running state. ये रनिंग स्टेट में आ जाए तो हमें क्या करना है, इस इंस्टेंस पे क्लिक करना है और इसका पब्लिक आईपी एड्रेस लेना है। इसका पब्लिक आईपी एड्रेस लेके हमें अब क्या करना है, इस इंस्टेंस को कनेक्ट करना है। तो ये इस वे से अगर आप करोगे तो यू विल हैव CentOS system ready in 5 minutes and you can connect this instance from anywhere as long as you have your PEM file with you. Okay, so वो PEM file को लॉस नहीं करना है। वो PEM file ऐसा हो तो आपने जो डाउनलोड किया है उसको आप अपने पास स्टोर रखिएगा in any of the form. Okay, कि आप इसको जो है ना वो आप अपने ईमेल एड्रेस पे इसको सेंड कर दीजिएगा यूजिंग अ जिप। पहले इसको जिप करके आप अपने पास अपने आप को खुद को ईमेल पे सेंड कर दीजिएगा सो दैट यू डोंट लूज इट। और जब भी आपको इंस्टेंस कनेक्ट करना हो, कहीं से भी करना हो, तो नाउ इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी सिस्टम विथ। तो आप घर पे यूज करते हो या फ्रेंड का लैपटॉप यूज करते हो या फिर कहीं घूमने जाते हो, वहां पे आपको AWS का इंस्टेंस फॉर एग्जांपल कनेक्ट करने की नीड पड़ती है, तो यू कैन कनेक्ट इट फ्रॉम एनीवेयर बिकॉज इट्स अवेलेबल ऑन द इंटरनेट यूजिंग दिस आईपी एड्रेस यू कैन कनेक्ट। तो अब हमें कनेक्ट कैसे करना है इस इंस्टेंस को? तो वेरी फर्स्ट थिंग इज कि बाय डिफॉल्ट जो हमने की डाउनलोड किया है वो PEM फाइल है, और विंडोज के थ्रू अगर आपको ये इंस्टेंस कनेक्ट करना है तो PEM फाइल सपोर्टेड नहीं रहता है, उसको कन्वर्ट करना पड़ता है PPK फाइल में, या फिर हमें इसको कनेक्ट करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शंस है। नाउ वी हैव टू ऑप्शंस। वन इज टू use git bash. Git bash is one of the tool which provides bash shell on Windows. Okay, तो आपको क्या करना है, ये git bash जो है वो इंस्टॉल करना है। In order to install git bash, simply go on to the website as a simply type as a git sem. Okay, and download this git sem. Okay, यहाँ से git sem की साइट से जाके आपको क्या करना है, डाउनलोड करना है। डाउनलोड फॉर विंडोज और यू कैन ऑल्सो डाउनलोड इट फॉर मैक। आदित्य, दिस इज स्पेसिफिकली फॉर यू कि आपके पास अगर मैक है तो आपको जो है ना वो इवन गिट बैश डाउनलोड करने की भी नीड नहीं है, बिकॉज ऑन मैक टर्मिनल यू कैन ऑन मैक टर्मिनल PEM फाइल इज सपोर्टेड। सो जिनके पास विंडोज मशीन है, दिस इज फॉर देम। जिनके पास लिनक्स मशीन है या फिर जिनके पास मैक है, तो उनको ये गिट एससीएम डाउनलोड करने की नीड नहीं है, क्योंकि लिनक्स एंड मैक में PEM फाइल बाय डिफॉल्ट सपोर्टेड रहता है। विंडोज के अंदर बाय डिफॉल्ट PEM फाइल सपोर्टेड नहीं रहता है। तो इसलिए आपको क्या करना है,
git bash डाउनलोड करना है। अनदर वे इज टू कनेक्ट इट यूजिंग पुट्टी, बट पुट्टी से जो है ना वो आपको क्या करना रहता है, पहले पेम फाइल को कन्वर्ट करना रहता है पीपी के फॉर्मेट में, एंड देन यू कैन यूज पीपी के फाइल एज वेल। या फिर अगर आप लोग विंडोज यूज करते हो, तो जब कीपेयर आप लोग क्रिएट कर रहे थे, तो उस टाइम में यू हैड अ ऑप्शन ऑफ पेम फाइल और द पीपी के फाइल। तो अगर जो विंडोज यूजर्स हैं, तो वो पीपी के ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप पीपी के ऑप्शन सिलेक्ट करते हो, तो डायरेक्टली आपको पीपी के फाइल ही डाउनलोड होके मिलेगी, एंड यू कैन यूज पीपी के फाइल डायरेक्टली in one of the tool which is called as a putty. So you can use that tool in a putty, and you can connect your Linux machine. Okay, so there are two options for that. I am showing you both the options. Okay, connect कैसे करना है? This by doing this, ये जो EC2 इंस्टेंस क्रिएट हुआ है, इसके अंदर ऑलरेडी लिनक्स इंस्टॉल हो गया है, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट के इंस्टॉलेशन के क्या स्टेप्स रहेंगे, क्या नहीं रहेंगे। दैट इज एवरीथिंग मैनेज बाय AWS। सो इसके अंदर इंस्टॉलेशन तो हो गया, बट वी आर सीइंग कि हाउ वी कैन कनेक्ट दिस इंस्टेंस। इंस्टॉल हो गया, लेकिन इसको एक्सेस कैसे करें, इस सर्वर को एक्सेस कैसे करना है। ओके, so for accessing this server, one thing is you need to download git bash. अगर आपको git bash नहीं इंस्टॉल करना है, तो you can use also putty. उसको डाउनलोड करना हो तो क्या करना है, simply go to download, simply go to Google and click on download putty for Windows. इसको putty भी बोलते हैं, putty भी बोलते हैं, so whatever name you want to give, it's completely fine. So click here, you have an option of click download putty. Okay, and यहाँ से आपको इसका MSI पैकेज select करना है। Okay, so it simply take the simply get this package and double click it to install it. ये जब आप install कर दोगे, तो you will get this tool called as a putty. Okay, तो यहाँ से भी हम डायरेक्टली कोई भी लिनक्स मशीन को कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर पुट्टी से आपको कनेक्ट करना है लिनक्स मशीन को, तो उसके लिए या तो यूजर नेम या पासवर्ड होना चाहिए, बट AWS जो है ना वो यूजर नेम और पासवर्ड प्रोवाइड नहीं करता है, वो आपको पेम फाइल या पीपीके फाइल देता है। तो यू कैन यूज पीपीके फाइल टू कनेक्ट। तो पीपीके फाइल से अगर आपको कनेक्ट करना है, तो आपको क्या करना है, SSH में जाके ऑथ में जाके यहाँ पे वो पीपीके का पाथ देना है। ओके, सो अभी हमारे पास पीपीके फाइल नहीं है, हमारे पास पेम फाइल है, तो पेम फाइल इज नॉट सपोर्टेड इनटू पट्टी। ओके, एंड पीपीके फाइल इज नॉट सपोर्टेड इनटू गिट बैश। ओके, सो अगर आपके पास पेम फाइल है, तो ये टूल से आप कनेक्ट नहीं कर सकते हो, बट वी कैन ऑलवेज कन्वर्ट द पेम फाइल इनटू अ पीपीके फाइल। ओके, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, पेम फाइल को पीपीके फाइल में कन्वर्ट करने का वे बताता हूँ। सो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ से पट्टी डाउनलोड करना है और इंस्टॉल करना है। जब आप ये पट्टी इंस्टॉल करोगे, तो यहाँ पे आपको एक आप अपने विंडोज के अंदर जब सर्च करोगे, यू विल गेट दिस एज अ पुट्टी। सो यू कैन कनेक्ट दिस पुट्टी इज फॉर कनेक्टिंग, and there is one more tool which is called as a putty gen. So you have to open this putty gen in order to convert your PEM file into PPK file. Okay, now what you need to do is, we already have the PEM file. So हमें क्या करना है, वो PEM file को इस टूल के थ्रू कनेक्ट करना है, लोड करना है। सो जनरेट नहीं करना है, आपको सिंपली लोड करना है। सो क्लिक ऑन लोड, और अभी जो हमने PEM फाइल डाउनलोड किया था, वो यहाँ से ओपन करना है। सो व्हेन यू ओपन इट, योर key is imported,
ओके, अब आपको सिंपली क्या करना है, इसको ओपन करने के बाद click on save private key and it will give you warning that are you sure you want to save this key without a passphrase to protect it. ये ऑप्शन आपको yes ही सिलेक्ट करना है. ओके, तो नाउ अब यहाँ पे आप जो भी आप नाम दोगे उस फाइल का जो फॉर्मेट होगा वो होगा पीपीके फॉर्मेट. तो मैं इसका नाम भी वही सेम देता हूँ, ict_training.pem निकाल दिया है because it is this file name or the file format will be ppk. Click on save. तो ये हमारी pem फाइल जो है वो ppk फाइल में सेव हो गई है. So if you see it ppk फाइल, तो ppk फाइल आपको कुछ ऐसा दिखेगा, पीसी के ऊपर हेड का कुछ सिंबल रहता है. So अब ये वाला जो है ना वो ppk फाइल से हम लिनक्स का सर्वर कनेक्ट कर सकते हैं. So now we can open 50 and यहाँ पे ये जो EC2 इंस्टेंस आपने क्रिएट किया है, guys, give me few moments. I have to shift my place. So give me few moments while I'm shifting. Okay, guys. So I was telling like हमने पीपीके फाइल जनरेट कर दिया है. अब हमें क्या करना है, इंस्टेंस को कनेक्ट करना है. हमारे पास आईपी एड्रेस तो है, हमें पासवर्ड की नीड नहीं है क्योंकि पासवर्ड की जगह पे पीपीके फाइल यूज होगा. ओके, एंड लिनक्स यहाँ से AWS में से आप कोई भी सर्वर क्रिएट करते हो तो उसका कोई भी पासवर्ड नहीं रहेगा एक्सेप्ट इन केस ऑफ विंडोज. लेकिन वो विंडोज के लिए थोड़ा प्रोसेस डिफरेंट है. बट वी आर नॉट लर्निंग क्लाउड और वी आर नॉट लर्निंग विंडोज, सो वो हम चीज डिस्कस नहीं करेंगे इसमें. तो लिनक्स का कोई भी सर्वर आप AWS के अंदर लॉन्च करते हो तो आप बाय डिफॉल्ट इसको आप उसको इसके साथ कनेक्ट नहीं कर सकते पासवर्ड के थ्रू. तो हमारे पास आईपी एड्रेस है, हमारे पास यूजर नेम है, बट हमारे पास पासवर्ड नहीं है. पासवर्ड के लिए हमारे पास पीपीके फाइल है या पेम फाइल है. तो पीपीके फाइल या पेम फाइल से कनेक्ट कैसे करना है, दैट वी विल सी इट नाउ. तो हमारे पास पेम फाइल भी है, पीपीके फाइल भी है. सो फर्स्ट वी विल कनेक्ट यूजिंग पीपीके फाइल. तो ये वाला जो टूल है ना बहुत लाइट वेट है और इसके लिए आपको कुछ भी करना नहीं रहता है. तो आपको यहाँ पे यूजर नेम देना है. तो जब आप CentOS 7 वाला इमेज लोगे तो उसका डिफॉल्ट यूजर नेम CentOS है, वो कहीं पे लिखा हुआ नहीं है. ओके, बट यू हैव टू
जस्ट रिमेंबर कि उसका यूजर नेम CentOS है, @IP एड्रेस देना है, एंड तो यूजर नेम और IP एड्रेस दे दिया। अब हमें क्या देना है, पासवर्ड देना है। तो वी डोंट हैव द पासवर्ड, पासवर्ड की जगह पे हमारे पास फाइल है, तो उस फाइल को आपको इसके साथ अटैच करना है। तो फाइल को अटैच करने के लिए क्या करना है, आपको SSH, ये जब आप ओपन करोगे तो अंडर कनेक्शंस आपको यहाँ पे SSH दिखेगा। सो SSH को आपको एक्सपेंड करना है, एंड उसमें आपको ऑथ सिलेक्ट करना है, और ऑथ सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे प्राइवेट की फाइल फॉर ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन दे रहा है, तो यहाँ से आपको वो PPK फाइल का पाथ देना है। You have to attach that PPK file with your this particular thing. Okay, click on open and now go back to session. So when you click on open, तो ये अभी open हो जाएगा। लेकिन every time अगर आपको ना ये चीज करने की नीड नहीं है, तो आप क्या करो, इसका एक सेशन सेव कर दो, so that कि आपको every time ये यूजर नेम और ये IP एड्रेस और ये ऑथेंटिकेशन में PEM और PPK फाइल का पाथ देना वो बार बार नीड ना रहे, तो आप यहाँ पे इसको सेशन को सेव कर दो। So what I'm doing is, so I'm writing as a ICT Linux training, okay, and click on save. तो ये अब ना सेव हो गया है। तो एवरी टाइम जब भी मैं इसको ओपन करूंगा तो बाय डिफॉल्ट इसको सिलेक्ट करके लोड करना है, लोड करके ओपन करना है। तो अब ये क्या होगा कि ये जो इसके अंदर हमने PPK फाइल का जो पाथ दिया है एंड एवरीथिंग एल्स दैट इज ऑलरेडी डन इट। तो क्लिक ऑन ओपन। जैसे ही आप ओपन करोगे, इफ व्हेन यू आर कनेक्टिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, आपको उसका एक ऐसा सिक्योरिटी अलर्ट आएगा। यू हैव टू सिंपली क्लिक ऑन एक्सेप्ट एंड you will be connected to your CentOS machine. Okay, तो हम अपने CentOS के अंदर लॉगिन कर लिए हैं। Okay, so this is the way how you can log in to your Linux machine that we have created from using AWS Cloud. ठीक है, this is one way of connecting. जिन्होंने इसको PEM फाइल के थ्रू कनेक्ट करना है, तो उस केस में आपको क्या करना है, आपको git bash इंस्टॉल करना है और git bash ओपन करना है। जब आपने git bash ओपन कर लिया, तो आपको क्या करना है, ये जो PEM फाइल है वो आपने कौन से पाथ पे रखी है, वो पाथ पे जाना है। सो वो PEM फाइल हमने डाउनलोड फोल्डर में रखी है, तो यहाँ पे लिखना है cd डाउनलोड्स। ओके, डाउनलोड्स फोल्डर में मैं आ गया हूँ। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, एक कमांड लिखना है, एंड द कमांड इज ssh-i एंड PEM फाइल का नाम देना है। सो PEM फाइल का नाम इज ICT ट्रेनिंग -PEM। ये फाइल का नाम दे दिया। अब यूजर नेम और पासवर्ड देना है, CentOS IP एड्रेस दे लेना है। यहाँ से IP एड्रेस कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया। पेस्ट करने के लिए आप राइट क्लिक करके पेस्ट कर सकते हो, या फिर शिफ्ट इंसर्ट करोगे तो वो उससे पेस्ट होता है। कंट्रोल-C से पेस्ट नहीं होता है, सॉरी कंट्रोल-V से पेस्ट नहीं होता है, शिफ्ट इंसर्ट बटन से पेस्ट होता है। ओके, सो व्हेन यू क्लिक ऑन दिस, तो ये कनेक्ट हो जाएगा। जब भी आप ये टूल से, किसी भी टूल से फर्स्ट टाइम कनेक्ट करते हो, तो आपको यहाँ पे ये चीज प्रोवाइड करनी पड़ेगी। यहाँ पे आपको यस लिखना है, एंड नाउ यू आर कनेक्टेड टू योर AWS इंस्टेंस। ओके, तो कमांड, ये मैं कमांड आप लोग को शेयर कर रहा हूँ। ओके, ये कमांड जस्ट शेयर कर रहा हूँ इन अ वे कि, लेकिन ये जो डिटेल्स हैं वो आपको आपके खुद की डिटेल्स भरनी रहेंगी। ये जो मैं डिटेल्स भर रहा हूँ वो वाली डिटेल्स वर्क नहीं करेंगी। ओके,
अच्छा, जिनके पास ऑलरेडी उबंटू मशीन है या फिर कोई और, जैसे मैंने आपको बोला ना कि आपके पास अगर ऑलरेडी लिनक्स इंस्टॉल्ड है, लिनक्स में अगर आपके पास उबंटू है या फिर आपके पास मैक सिस्टम है या आप कोई भी या आप कोई भी जो है ना वो दूसरा सिस्टम यूज करते हो विच इज लिनक्स बेस्ड, तो आपको ये कोई भी टूल इंस्टॉल करने की नीड नहीं है। आप डायरेक्टली ये वाला कमांड लिखोगे ना, ssh-i and the path of this pem file centos @your IP address, so you will be able to connect without installing any tool. These tools are required for Windows. कि विंडोज मशीन से अगर आपको ये कनेक्ट करना है तो आपको इनमें से कोई एक टूल यूज करना पड़ेगा। देयर इज नो ऑप्शन ऑफ डिफॉल्ट इन विंडोज। विंडोज के अंदर डिफॉल्ट आप SSH कमांड यूज नहीं कर सकते हो। So that's why this is to connect your Linux server from Windows. लिनक्स टू लिनक्स में करना है तो आपको सिंपली ये वाला कमांड देना है। ओके, सो git bash is like a bash terminal here in Windows. तो अगर आपके पास उबंटू है या फिर आपके पास मैक सिस्टम है तो उसमें आपको सिंपली डायरेक्टली ये कमांड एंटर करना है और आपको की जो है वो पेम फॉर्मेट में ही डाउनलोड करना है। एनी क्वेश्चन हियर guys? Any question here? Yes, किसी को कोई डाउट या क्वेश्चन है यहाँ तक? नो सर। So समझ में आया कि ये चीज कैसे करनी है? So how many of you? Okay, let me now show you another method, and the next question that I will ask you is, how many of you would want to go with AWS method, and how many of you want to use your लोकल इंस्टॉलेशन? लोकल इंस्टॉलेशन का एडवांटेज ये है कि आप उसको कभी भी कहीं पे भी कैसे भी मैनेज कर सकते हो। AWS के इंस्टेंस का एडवांटेज ये है कि वो आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो। AWS के इंस्टेंस का एक प्रॉब्लम ये है कि अगर आपने ये इंस्टेंस आपका समहाउ एक्सेस नहीं हो रहा है तो आप उसको ट्रबल शूट ज्यादा नहीं कर पाओगे। कनेक्ट अगर नहीं हो रहा है तो कुछ भी नहीं कर पाओगे, एक्सेप्ट कि फ्यू थिंग्स आप ट्राई करो, और अगर वो सारी चीजें प्रॉपर कर रहे हो उसके बाद भी कनेक्ट नहीं हो रहा है तो देन देयर इज अ प्रॉब्लम विथ AWS इंस्टेंस, एंड वो फिर आप फिक्स इतना इजीली नहीं कर पाओगे एट अ इनिशियल लेवल। तो बेटर इज के यू यूज होस्टेड इंस्टॉलेशन। लेकिन उसका एक डिसएडवांटेज ये रहता है कि अगर आप वो होस्टेड इंस्टॉलेशन यूज करते हो तो आपके सिस्टम के रिसोर्सेज यूज होंगे उसके लिए आपको, बट आई वुड प्रेफर कि आप जो है वो लोकल वाला इंस्टॉलेशन कीजिएगा। जिनके पास सिस्टम अच्छे वाले अवेलेबल नहीं है तो वो लोग ये वाला यूज कर सकते हैं। ओके, बट इफ यू आर यूजिंग कॉलेज लैब तो फिर कोई टेंशन की बात नहीं है, या यू कैन गो इन अ वर्चुअल बॉक्स एज वेल। वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉलेशन कैसे करना है उसके लिए मैं आपको एक लिंक शेयर करूंगा, बट अभी जो मैं इंस्टॉलेशन मेथड बता रहा हूँ that is something that we will create as a virtual machine in our laptop or in our PC, and वो कैसे करना है आपको वो बताता हूँ। Yeah, we will go, in fact we will go with also a virtual box installation. virtual box हमें डाउनलोड करना है और फिर वो हमें उस वर्चुअल बॉक्स के अंदर एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करना है और उस वर्चुअल मशीन को हमें कनेक्ट करना है। ओके, सो
So let's now explore that option. तो ये अभी वाला जो ऑप्शन है उसको हम we have seen this option. तो अभी के लिए मुझे इस इंस्टेंस की नीड नहीं है, तो मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ, बिकॉज AWS का एक इंस्टेंस हमें, एक इंस्टेंस नहीं बल्कि आपको 750 आवर्स फ्री मिलते हैं. सो 750 आवर्स अगर मैं ये दोनों इंस्टेंस रनिंग करूंगा पूरे महीने, अगर इसको रन कर रहा हूँ, तो इट विल बी मोर देन 750 आवर्स. सो इसलिए मैं इसको स्टॉप कर दे रहा हूँ. Okay, so the thing is, हम देखिए जाए, हम जो है ना वो उबंटू इंस्टॉल नहीं करेंगे, बिकॉज उबंटू इज समथिंग कि वो बहुत ज्यादा ट्रेनिंग पर्पस के लिए, या फिर इंडस्ट्री में उबंटू भी यूज होता है, सेंटोस भी यूज होता है, बट हमारा ट्रेनिंग जो है ना वो मेजरली सेंटोस पे रहेगा. उबंटू में सिर्फ एक ही चीज चेंज रहती है, वो रहता है पैकेज इंस्टॉलेशन. तो अगर आपको कोई भी एक लिनक्स आता है तो बाकी आपको आ ही जाते हैं लिनक्स. So don't worry on that part. Okay, sir. तो अगर आपने सेंटोस सीख लिया तो आपको उबंटू भी आएगा, आपको काली भी आएगा, बट काली के अंदर जो डिफरेंट टूल्स यूज होते हैं वो आपको नहीं आएंगे, बिकॉज दैट आर दोज आर स्पेसिफिक टू दैट पर्टिकुलर एनवायरनमेंट. ओके, बट लिनक्स आप कोई भी यूज कर सकते हो. सो फॉर इंस्टॉलेशन ऑन योर लोकल इंस्टॉलेशन के लिए हम क्या करेंगे, एक खुद का मशीन क्रिएट करेंगे, और खुद का मशीन क्रिएट करने के लिए आपको जो एक टूल इंस्टॉल करना है, दैट इज कॉल्ड एज अ वर्चुअल बॉक्स. सो डाउनलोड वर्चुअल बॉक्स. ओके, आई एम गोइंग टू डाउनलोड दिस वर्चुअल बॉक्स ऑन माय सिस्टम. विंडोज होस्ट के लिए हमें डाउनलोड करना है. सो क्लिक ऑन विंडोज होस्ट, क्लिक ऑन सेव. ये वर्चुअल बॉक्स डाउनलोड कर रहा है. ये ओरेकल वर्चुअल बॉक्स हमारा डाउनलोड हो गया है. अब आपको क्या करना है, ओरेकल वर्चुअल बॉक्स पे क्लिक करके इसको इंस्टॉल करना है आपके सिस्टम पे. ओके, सो ओरेकल वर्चुअल बॉक्स डाउनलोडर इंस्टॉल हो रहा है, डाउनलोड होके इंस्टॉल हो रहा है.
and start Oracle VirtualBox 6.1.38 after installation. Click on finish. तो आपका ये Oracle VirtualBox इंस्टॉल हो गया है एंड जब आपने Oracle VirtualBox इंस्टॉल कर लिया है तो आपको ऐसा कुछ इंस्टॉल करने के बाद आपको ये ऐसा दिखेगा. Now what you need to do is you need to create one new virtual machine here. So Oracle VirtualBox is a tool which provides you virtualization. तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करना है. सो वर्चुअल मशीन क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना है, क्लिक ऑन न्यू. यहाँ पे आपको वर्चुअल मशीन का नाम देना है और वर्चुअल मशीन का जो फोल्डर है वो बाय डिफॉल्ट सी के अंदर सिलेक्ट कर रहा है, लेकिन आई एम चेंजिंग दिस पाथ क्योंकि मुझे सी के अंदर इंस्टॉल कुछ नहीं करना है. सो मैं ये चेंजेस, हेलो, यस, गिव मी अ मोमेंट. सो मैंने ये जो है ना वो वर्चुअल बॉक्स का पाथ मैंने सेलेक्ट कर लिया है और इवन वर्चुअल बॉक्स के अंदर भी मैं एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ एंड आई विल गिव दिस नेम एज CentOS 7. CentOS 7 हमें इंस्टॉल करना है तो हम ये फोल्डर एक बना के मशीन का नाम भी मैं ICT CentOS 7 सेलेक्ट कर लेता हूँ. हमें टाइप जो है वो लिनक्स सेलेक्ट करना है और यहाँ से आप ना अदर लिनक्स 64 बिट सेलेक्ट कर लीजिएगा. दैट्स कम्प्लीटली फाइन. इसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस करने की नीड नहीं रहती है. अब यहाँ पे टाइप कुछ भी सिलेक्ट करो से सच ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं पड़ता है, बट स्टिल ट्राई टू बी मोर स्पेसिफिक. ओके, क्लिक ऑन नेक्स्ट. सो यहाँ से हमें मेमोरी साइज सिलेक्ट करना है. तो अगर आपके सिस्टम की कैपेसिटी, अगर आपके सिस्टम विंडोज सिस्टम या आपका जो मशीन है वो वो अगर 8 GB का है तो आप यहाँ से 2 GB का 2 GB मेमोरी असाइन कर सकते हो. बट इफ योर सिस्टम इज ऑलरेडी 4 GB तो आप 1 GB से ज़्यादा उस मेमोरी असाइन नहीं करना. So 1 GB is 1024 and 2 GB is 2048 MB. So my system has a larger capacity, तो मैं इसको 2 GB मेमोरी असाइन कर रहा हूँ. तो अगर आपका सिस्टम 8 GB का है तो आप इसको 2 GB असाइन कर सकते हो, लेकिन इफ योर सिस्टम इज 4 GB तो आप इसको 1 GB ही असाइन करना. नेक्स्ट इज असाइनिंग हार्ड डिस्क. सो ये हार्ड डिस्क वाले ऑप्शन में आपको क्या करना है, क्रिएट अ वर्चुअल हार्ड डिस्क नाउ. क्लिक ऑन क्रिएट. यहाँ से जो फाइल टाइप है वो आपको डिफॉल्ट सेलेक्ट करना है और यहाँ पे स्टोरेज ऑन फिजिकल हार्ड डिस्क इज टू बी डायनेमिकली एलोकेटेड. यहाँ से साइज जो आपने इनिशियली सिलेक्ट किया था 8 GB दिखा रहा है, सो यू जस्ट ग्रो इट टू 15 GB. तो या फिर आप यहाँ पे मैनुअली टाइप कर दो 15 GB. ओके, सो दैट्स इट. क्लिक ऑन क्रिएट. ओके, तो आपका ये वर्चुअल मशीन क्रिएट हुआ है.
बट अभी इसके अंदर अभी इसके अंदर हमारा CentOS इंस्टॉल नहीं हुआ है, ठीक है। दिस इज जस्ट अ सिंपल ब्लैंक वर्चुअल मशीन विच इज क्रिएटेड। तो अभी हमें ये चीज क्रिएट करनी हो, CentOS इसके अंदर इंस्टॉल करना हो, तो आपको क्या करना है, इस मशीन को सिलेक्ट करके just go to the settings of this virtual machine and go to the storage option। और यहाँ पे आपका जो यहाँ पे आप जो ये डिस्क वाला है ना, दिस इज शोइंग एज एम्प्टी। तो आपको यहाँ से क्या करना है, इस डिस्क को सिलेक्ट करना है और यहाँ से डिस्क को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको ISO इमेज अप्लाई करना है। तो ISO इमेज अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ से क्या करना है, चूज अ डिस्क फाइल सिलेक्ट करना है एंड आपको ISO डाउनलोड करना है। दिस ISO इज अ वेरी बिग इमेज, इट्स अ 4.3 GB डिस्क स्पेस है इसका, 4.3 GB का है। सो जस्ट डाउनलोड दिस वन एंड अटैच विथ योर इंस्टेंस, अटैच विथ योर मशीन। तो अब यहाँ पे डिस्क में ना ये हमारा CentOS 7 दिख रहा है image। Click on OK। Now we simply need to click on start to start this virtual machine। Click on start। तो जब आपने ये अटैच किया है तो आपको ये ऑप्शन देगा कि जो इमेज आपने अटैच किया है तो उससे आपको फर्स्ट टाइम इंस्टॉलेशन करने के लिए ये ऑप्शन ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जस्ट क्लिक ऑन इंस्टॉल CentOS 7 एंड हिट एंटर। So now we are seeing कि हम इसका इंस्टॉलेशन किस तरीके से करेंगे। ओके ओके, ये इंस्टॉलेशन का विजार्ड ओपन हुआ। तो आपको क्या करना है, it says welcome to CentOS 7, what language would you like to proceed during the installation process। आपको सिर्फ इंग्लिश ही सिलेक्ट करना है। क्लिक ऑन कंटिन्यू एंड यहाँ से आपको इंस्टॉलेशन का सोर्स और ये यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है, प्लीज कंप्लीट आइटम्स मार्क विथ दिस आइकन। तो ये वाला जो वार्निंग वाला आइकन है ना, जिस पे कंप्लीट नहीं होगा, ये जब तक कंप्लीट नहीं होगा ना, ये क्लियर नहीं होगा आइकन, तब तक हमारा इंस्टॉलेशन नहीं बढ़ेगा। तो हमें इसका इंस्टॉलेशन कंप्लीट करने के लिए पहले 2-3 स्टेप्स परफॉर्म करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, नेटवर्क एंड होस्ट पे जाना है एंड इसको सिंपली टर्न ऑन करना है। तो ये आपको ऑटोमेटिकली एक IP एड्रेस असाइन कर देगा। ठीक है? आपका ये जो आपको IP एड्रेस असाइन कर रहा है, जस्ट क्लिक ऑन डन। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से डेट एंड टाइम सेलेक्ट करना है। तो डेट एंड टाइम में यू जस्ट क्लिक ऑन इंडिया मैप एंड क्लिक ऑन डन। तो आपका डेट एंड टाइम सेट हो जाएगा। कीबोर्ड आपको अगर उसका लेआउट चेंज करना है तो यू कैन सेलेक्ट एनी अदर लेआउट ऑफ कीबोर्ड, बट जनरली वी यूज इंग्लिश US। इंस्टॉलेशन सोर्स में आपको कुछ चेंजेस करने की नीड नहीं है, लेकिन आपको सॉफ्टवेयर सिलेक्शन में आपको क्या करना है, क्योंकि हम CentOS अभी
फ्रेश सीख रहे हैं तो हम पहले क्या करेंगे, सर्वर विथ GUI वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे एंड जस्ट क्लिक ऑन डन। मिनिमल इंस्टॉलेशन करोगे तो इसमें क्या होगा कि एकदम ब्लैंक ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन दिखेगा सिंपली, और कोई भी इसके अंदर एडिशनल टूल्स इंस्टॉल नहीं रहते हैं। तो हम सर्वर विथ GUI अभी के लिए ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे एंड क्लिक ऑन डन। लेकिन अगर आप फॉर एग्जांपल AWS का इंस्टेंस यूज करते हो ना, तो उसमें GUI आता ही नहीं है, उसमें ऑलवेज कमांड लाइन ही रहेगा। एंड गाइस हम लोग जो है ना वो सेंटोस या कोई भी लिनक्स जो भी हम सीखेंगे वो पूरा कमांड लाइन बेस्ड होगा। हम GUI पे कुछ भी नहीं करने वाले हैं। ओके, सो तो अगर आप यहाँ से मिनिमल इंस्टॉलेशन भी सिलेक्ट करते हो, दैट इज ऑल्सो अ गुड ऑप्शन। ओके, और वो एकदम लाइट वेट रहेगा, तो आपके मशीन पे भी ज्यादा लोड नहीं रहेगा उसका। यहाँ पे ना फिर इंस्टॉलेशन डेस्टिनेशन पूछ रहा है। तो इंस्टॉलेशन डेस्टिनेशन में आपको क्या करना है, यहाँ पे ये ऑप्शन दे रहा है कि ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर पार्टीशनिंग। ये दिस इज अ डिफॉल्ट ऑप्शन, बट आपको ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करना है। व्हाट वी विल डू इज आई विल कॉन्फ़िगर पार्टीशनिंग, ये वाला हम ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे एंड क्लिक ऑन डन। So when you click on that option, so it is taking you to creating the manual partition with yourself by yourself. तो आपको क्या करना है, यहाँ से मैनुअल पार्टीशनिंग में आपको स्टैंडर्ड पार्टीशन सेलेक्ट करना है एंड क्लिक ऑन स्टैंडर्ड पार्टीशन सेलेक्ट करना है एंड आपको यहाँ से अब पार्टीशंस क्रिएट करना है। तो यहाँ पे जो हम पार्टीशंस क्रिएट करेंगे ना, अभी के लिए जस्ट ये याद रख लो कि हम 3 पार्टीशन क्रिएट करेंगे एंड दोस 3 पार्टीशंस वुड बी, द फर्स्ट पार्टीशन वुड बी स्लैश boot, the second partition would be, or the first partition is slash, the second partition is slash boot and the third partition is swap. ओके, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 3 पार्टीशन क्रिएट करना है। और वो 3 पार्टीशन क्रिएट करने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिखा रहा है, ऐड अ न्यू माउंट पॉइंट, क्लिक ऑन इट। और यहाँ से माउंट पॉइंट आपको सिलेक्ट करना है। सबसे पहले सिलेक्ट इज स्लैश। तो ऑलरेडी इसका टोटल स्पेस 15 GB है, तो वी विल असाइन 12 GB टू दिस पर्टिकुलर स्लैश पार्टीशन। तो आपको यहाँ से क्या करना है, डिजायर्ड कैपेसिटी में 12 GIB लिख देना है। GIB या सिंपली जी लिखोगे तो भी चलेगा। सो बट if you write 12 GIB, it will assign 12 GB specifically. ओके, और यहाँ से आपका एक पार्टीशन क्रिएट हो गया। अब हमें 2 और पार्टीशन क्रिएट करना है। एक हमें पार्टीशन क्रिएट करना है स्लैश बूट, उसका साइज आपको 1 GB रखना है, तो 1 GIB। ओके, एंड क्लिक ऑन एड माउंट पॉइंट। ओके, तो हमारा बूट क्रिएट हो गया। बूट का साइज 1 GB रखना है और स्लैश का 12 GB हमने रखा है बिकॉज स्लैश इज योर मेन पार्टीशन। तो इसको जितना आपका डिस्क स्पेस हो उसका मैक्सिमम साइज यहाँ पे देना है। वी विल सी के इसको हम ये स्लैश स्लैश बूट या स्वैप क्या होता है वो आगे हम डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए जस्ट आपको ये ध्यान रखना है कि आपको 3 पार्टीशंस क्रिएट करने हैं। स्लैश बूट में 1 या 2 GB से ज्यादा असाइन नहीं करना है। स्वैप में हमें उतना ही साइज असाइन करना है जितना आपने मेमोरी असाइन किया है। तो अगर आपने 1 GB मेमोरी आपके वर्चुअल मशीन को असाइन किया है तो आप इसको 2 GB असाइन करो स्वैप। अगर आपने 2 GB किया है तो आप 2 GB भी कर सकते हो, 4 GB भी कर सकते हो, बट बेस्ड ऑन योर डिस्क कैपेसिटी। ओके, जनरली स्वैप जो है ना वो डबल ऑफ योर मेमोरी स्पेस होता है, लेकिन दैट इज स्टिल 16 GB। कि अगर आप 16 GB तक का आप यूज करते हो, रैम असाइन करते हो, तो आप उसको स्वैप डबल असाइन करो। लेकिन 16 GB से 16 GB से अगर आप ज्यादा मेमोरी असाइन करते हो तो स्वैप का साइज उतना ही रखने का जितना आपने मेमोरी असाइन किया है। तो अभी के लिए हम स्वैप का साइज उतना दे रहे हैं
इतना हमने मेमोरी असाइन किया in my case, but in your case you may assign it double of its memory. Okay, जो आपने RAM असाइन किया उसके आपको डबल देना है. But in my case I'm just assigning. अच्छा, simply मैंने 2 लिखा है तो it is considering as a 2 MB. तो 2 KB, तो 2 KB का स्वैप क्रिएट नहीं करना है, हमें 2 GB का करना है. So by default it is taking as a swap. Desired capacity is 2 GI. Okay, and click on add mount point. Okay, तो हमारा पार्टीशनिंग क्रिएट हो गया. क्लिक ऑन डन. तो ये आपको बता रहा है कि इसका पार्टीशन टेबल कैसा दिखेगा. क्लिक ऑन एक्सेप्ट चेंजेस एंड नाउ वी गेट दिस ऑप्शन ऑफ बिगिन इंस्टॉलेशन. तो यहाँ से अब हमें ये बटन क्लिक करके इंस्टॉलेशन स्टार्ट करना है. इंस्टॉलेशन हैज स्टार्टेड नाउ. ओके, दिस विल टेक सम टाइम. एंड अब इसके अंदर जैसे लिनक्स विंडोज के अंदर डिफॉल्ट यूजर एडमिनिस्ट्रेटर होता है, तो लिनक्स के अंदर जो डिफॉल्ट यूजर होता है वो रूट होता है. यूजर नेम इज रूट. तो आपको क्या करना है, इसका पासवर्ड सेट करना है. डोंट सेट एनी कॉम्प्लेक्स पासवर्ड. तो एकदम सिंपल अभी पासवर्ड असाइन करना है. सो आई एम असाइनिंग द पासवर्ड एज अ रेड हैट. ओके, एंड जब ये क्रिएट हो जाएगा तो उस टाइम में कोई यूजर क्रिएट करे या ना करे उसके लिए न्यू यूजर क्रिएशन है. तो वी आर लीविंग दैट ऑप्शन. ओके, तो आपको सिंपली रूट का पासवर्ड सेट करना है. रूट का हमने पासवर्ड सेट कर दिया है. नाउ लेट्स वेट फॉर दिस इंस्टॉलेशन टू फिनिश. गाइस, किसी को यहाँ तक कोई डाउट है तो वो पूछ सकते हैं. यस गाइस, किसी को कोई डाउट यहाँ तक? Okay, now tell me. Okay, I'm stopping this share for a few moments. Okay, now every one of you, अभी क्योंकि क्लास हमारा थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ था तो इसलिए हमने किसी का इंट्रोडक्शन वगैरह नहीं लिया था. सो ये जब तक इंस्टॉलेशन हो रहा है तब तक आई रिक्वेस्ट एवरी वन ऑफ यू टू प्लीज टर्न ऑन कैमरा एंड गिव योर इंट्रोडक्शन. Yes, every one of you guys, please turn on your camera. And this applies to first myself.
Yes, every one of you guys, or Kunal, okay, Kunal has some problem. Yash, Pratham, Sahi, Vishwa, Tanraj, Mekana, Nishit, Rituraj. Okay, then start your introduction a little bit, or why you have like Linux as your elective. तो जो लोग पहले पढ़ के आएंगे, okay, yeah, you guys can start your introduction. So who will be the first? Neer? Yes, sir. So you can start with yourself. Sir, my name is Neil Goswami. I'm from Mumbai and currently pursuing ICT in Marwar University. And how about the installation method? Which would you prefer to Sir, use? VM virtual machine. Okay, cool. Okay, yes. Who's next? Jay? Yes, sir. Yeah. Hello. Yes, Jay, you can. Sir, I am JP Palya. Study in CM5 ICV department. So I think most of you guys know me before. So कोई भी language में आपको whichever language you are comfortable you can speak. तो अगर आपको हिंदी, गुजराती या फिर इंग्लिश में से जो comfortable लगता है you can ask in that, you can give the answer. But मैं चाहना वो या हिंदी या फिर इंग्लिश ही यूज करूंगा. गुजराती आता है but not that fluent. Yes, Pratham. Yes, Pratham. Pratham, Kinjal, whomsoever, guys, just a quick introduction with all of you. Hello, sir. My name is Kinjal Jadhav, and currently I am in fifth semester in ICT department. Good. And I'm from Rajkot. Okay. Acha guys, roll number wise ही introduction देना start. So I don't know, like otherwise I have to call everyone's name. So give your introduction
giving your roll number. So जिन लोगों ने दे दिया है वो चलेगा, बाकी start giving your introduction. Mayur, yes, Yes, sir. I see Mayur. Yes. Sir, my name is Mayur Jadeja. I am from Gondal and currently pursuing my 5th semester in ICT department, Marwar University. Okay. Cool. Charmi. Myself, Charmiganga. I am from Babra. Okay. Jeel. Myself, Jill Padari, and I am from Rajkot. Okay. Dhairya. Dhairya. I'm sorry if I call anyone's name as wrong. You can correct me. Yes, hello. So my name is Dhairya Satani. I am from Surendranagar. Currently pursuing my 5th sem of ICT. Okay. Janvi. My name is Janvi Gupta. I'm from Rajkot. I'm currently pursuing my BTech degree in Marwar University, ICT department. Cool. Yes. Kivana. Yes, sir. My name is Kevna Purohit. Right now, I am from Rajkot and I am pursuing BTech in Marwar University in ICT department. Yes. Who's next? Good morning, sir. My name is Shruti Natswani and I'm currently pursuing Information and Communication Technology from Marwar University. Cool. Yes, who's next? Good morning, sir. My name is Saitri Sujitra. I am from Ambreli and currently pursuing ICT in Marwar University. Hello, sir. Good morning, sir. Myself, DS Kotari. I am from Bhavnagar. Yes, next. Jane. Yes, sir. Good morning, sir. Good morning, everyone. This long. My name is Jean Patrick. I'm from Rwanda, Africa. I'm pursuing my BTech at Marwar University here in India. So I selected Linux administration as my elective course because I want to explore my domain of cloud computing. Thank you, sir. Yes, who's next?
Good morning, sir. Yeah, good morning. I am Shruti Pitwa and I am from Rajkot. Cool. Yes, Dhanraj. Good morning, sir. Good morning. So my name is Harmi Adroja. I am from Rajkot and currently I am pursuing BTech in Marwadi University, 5th sem, ICT department. Cool. Hello, sir. Hello, sir. Yes, hi, Arshi. Myself, Varsat. I am from our university, currently pursuing ICT in semester 2. I am from Bhutan. Hello, sir. My name is Krunal Trivedi. I am from Rajkot and currently I am pursuing ICT my degree in ICT department from Harvard University. Hello, sir. I am Vatsal Ramani. I am from Rajkot. Okay. A very good morning, sir. Hello, am I audible? Hello. Yes, yes. A very good morning, sir. My name is Sat Suredran. I'm from Rajkot and I'm looking forward to do my best in your Linux subject. Wow. Cool. Good morning, sir. My name is Ravi Thakur. I'm from Dwarka. Good morning, sir. Good morning. My name is Ruturaj Parmar and first of all, welcome back, sir. Once again, you teach us. Currently, I am studying in ICT department, semester 5. My hobby is like to play cricket and I also played nationals for our university in cricket. Thank you. Anyone else left out for introduction? Okay, I see a lot of you guys came from the previous cloud. Previously, I think you guys have done this course with me in diploma. So very few guys are new here. So yeah, let's now proceed further. So our installation is done. Installation हो गया है. Now when we click on reboot, this will reboot this system once, and we'll then be connected in our
connected our Linux system. So we have not created any other user. So we need to log in with root user only. Okay, so it is once this is done, it is asking you for initial setup. The license information is basically a user license agreement. So you just accept, click on finish configuration. So this is installed now, and it will take you to initial setup thing. Okay, we'll select English, typing as English. Next is this is creating the user profile. Okay, click on next. Location service on and off, whatever you wish to select. I selected the time zone as India and skip this option. And why it is giving this option? Skip. Okay, this is asking you to create one user. Give your username. So I'm giving my username as Vishan and click on next. I need to set the password because setting up the password as a simple one, but simple one it is not allowing. So I'm keeping a very different one. Next, start using Linux. Okay, so now we are now logging in, but it is login as a Isham user. So I just need to log out. We just need to log in as a root user. So जब भी आप CentOS मशीन में या किसी भी Linux मशीन में लॉग इन करेंगे तो हमें रूट यूजर से ही एक्शन परफॉर्म करना है. तो देखो यहाँ पे रूट यूजर कहीं पे दिख नहीं रहा है. So what you need to do is click on not listed and give the username as root and the password as whatever you have set. So I have set Red Hat, so it is connecting me to Red Hat. With the password as Red Hat, it is allowing me to connect. Okay, so we are now connected. Again, this is asking you for a user profile thing. Skip, start using Linux. And now we are logging as a root user. Okay, so these are the two different methods with which you can use Linux. So now all of you have to decide, like, you guys just let me know who will go with what option. You have both the options, but you have to make sure that the very first assignment for all of you is, and this is going to be marks based. Okay, तो किसी के अगर सिस्टम में लिनक्स इंस्टॉल नहीं है तो प्लीज गाइस डोंट थिंक कि अब आप जाना वो विदाउट इंस्टॉलेशन लिनक्स सीख भी पाओगे या फिर आप लिनक्स अच्छा जिसका इंस्टॉलेशन ही नहीं होगा ना तो यू कंसीडर योरसेल्फ एज अ फेल्ड फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे. ठीक है, किसी के पास अगर लिनक्स इंस्टॉल नहीं है इन एनी वे, I have given you these two options, so you can use any one of that option. अगर किसी का फिर भी नहीं है तो please from today onwards consider yourself as a failed in this subject. Okay, I'll not give any exceptions to anyone.
बिकॉज हमने लास्ट टाइम जो है ना वो डिप्लोमा में बहुत एक्सेप्शंस ले लिए थे, तो अभी हम कोई नहीं लेंगे। नेक्स्ट बाय द नेक्स्ट क्लास आप लोग को जो है वो इंस्टॉलेशन करना है। कल टुमारो वी विल हैव लेक्चर फ्रॉम 8 to 10 और नेक्स्ट वीक का फिर मैं शेड्यूल आप लोग को बताऊंगा, वेदर आई विल बी कमिंग टू राजकोट और आई बी टेकिंग ऑनलाइन। सो नेक्स्ट वीक का मैं जो है वो आप लोग को शेड्यूल कम्युनिकेट कर दूंगा। If I would come, then I would come on Thursday and Friday next week. If not, then it will be uh, it will be online session. तो आप लोग को ये इंस्टॉलेशन इस तरीके से करना है। प्रथम you are handling this session, right? I mean, आप हो ना इस सेशन के होस्ट आज के लिए। तो यस प्रथम, अभी ये रिकॉर्डिंग कौन कर रहा है? ये यस प्रथम कर रहा है। प्रथम, आर यू Yes, sir. लिसनिंग टू मी? ओके, तो प्रथम आपको जो है वो ये जो लिंक है, जो ये रिकॉर्डिंग का लिंक है, वो अपलोड करके आप प्लीज इंश्योर कीजिएगा कि ये लिंक जो है ना वो सबको मिल जाए आज ही, सो दैट के you may coordinate with Jala sir, or you may coordinate with another coordinator. I don't remember his name. Or you may coordinate with Vijay sir and ask him to share the link for today's recording so that you all can refer this recording and complete the installation maximum by tomorrow. Okay, so आप लोग को ये installation complete करना है. In the meantime, I am also sharing you one link. आप वो उस link को follow करके भी installation कर सकते हो. And I'm sharing you one link here. So you may follow this link of DevOps Tech in our video, and so you can watch this complete playlist for Linux tutorial for beginners in Hindi. Okay, so I'm just clicking on it. So first is what is Linux, and there are two. I'm sharing this playlist with you. You guys all refer for this playlist, and but for this time ये Linux operating system क्या होता है और इसको VirtualBox पे कैसे इंस्टॉल करना है. So I've shown you कि कैसे इंस्टॉल करना है, and you can also watch this वीडियो. आपको जाना वो ये वीडियो के इंस्टॉलेशन परफॉर्म डाउनलोड की नीड रहेगी, तो CentOS image you can download. So यहाँ से आपको ये वाला ISO डाउनलोड करना है, which is
4.4 GB. 4.4 GB वाला ये वाला ISO डाउनलोड करना है. The link for this particular copy link address. Yeah, you can also use VMware Workstation Meet. तो ये लिंक से आपको ISO डाउनलोड करना है. This ISO is 4.4 GB. So try to download this one. Okay, guys. Anyone have any question or doubt or anything you want to ask? Guys, किसी को कोई doubt या question है तो वो No, sir. No, sir. No, sir. So, Hetvi, please coordinate and prepare a list of all the students who are the participants of Linux batch. आज सारे लोग available हैं. I mean, except me. Anyone else? So there are 34 participants in Linux batch. Yeah, that's yes, that tutorial is in Hindi, but I'll also share you the link for English. Okay, yeah, this is for English. This is in English. But this may not have installation method. Let me see. Yeah, this I'm sharing you this playlist, and this has this playlist is in English, but you may, for the installation, you may follow my link, my video, or you can just follow it and try to install it by seeing that playlist, that particular video, and just see if you can follow it. Yeah. Any question or doubt? Anyone else? Okay, guys, everyone, attendance जो है वो आप chat में प्लेस कर दीजिए. Okay, आप सब लोग जो है वो यूनिवर्सिटी, I mean, do you all go to college or how it is? अगर college, Yes, sir, we go to college, but on third Saturday there is holiday, so that's why we are not supposed to come today. Okay. So सब लोग college जाते हो. So in case if I come next week, so you all will be there in the college, Yes, right? yes, we will be present in the college. Okay. What about Need? Need, you will be also there? Yes, sir. Okay. So everyone is going college, right? That's Yes, sir. what I understand. Yes, sir. Okay. Yes, इसका sir. मतलब इस बार कोई एक्सक्यूज नहीं दे पाएगा कि मेरे पास पीसी नहीं है या फिर. Good. That's good. If you are going to college, then you can install Linux in your lab, and then you can start practicing there.
ठीक है दिग्विजय, आपके पास पीसी है तो भी चलेगा, क्योंकि हमें we just want every one of you to just do practice. That's the ultimate motive. सबका अटेंडेंस हो गया? ओके हेतवी, आप जो है ना वो अटेंडेंस एंड प्रथम एंड हेतवी प्लीज कोऑर्डिनेट within yourself for today, and kal and make sure this recording is available to all of these students today itself, so that के सब लोग जो है वो installation perform कर पाएं, or any one of you can choose between any of those two methods. Like you can go with the AWS based installation, and you can also install it on your local system. Yes, sir. So कल हम further थोड़ा और discuss करेंगे related to Linux concepts. So make sure कि कल तक जो है वो सबका installation हो जाए, and by next week, if anyone does not have that installation ready, or किसी ने installation नहीं किया है due to any reason, then please mark yourself as a failed from the day one, because otherwise Linux हम just देख पाओगे लेकिन कर कुछ नहीं पाओगे. So you guys have already experienced that in your diploma. Okay, guys, thank you for your time. So let's connect tomorrow at 8. And कल कौन coordinate करेगा? Ritvi, you will coordinate, or Pratham, you will be there? हाँ सर. Okay. Okay, cool. So guys, thank you for your time, and we will connect tomorrow at 8. And I hope you all perform the installation today. जो लिंक मैंने शेयर किया है उसको फॉलो करके आप प्लीज इंस्टॉलेशन कर लीजिएगा. So whatever way you feel preferred, you just do the installation. Okay. Sir. Yes, Hitvi. Sir, as everyone is saying that tomorrow is Sunday, so they are not available. कौन अवेलेबल नहीं रहेंगे? Everyone of you? सब लोग बोल रहे कि डिपार्टमेंट का नहीं होता है लेक्चर संडे को, तो हाँ डिपार्टमेंट का नहीं होता है, बट आई थिंक यू गाइस हैव got a communication from Chala sir or Vijay sir that we will have lecture tomorrow. Okay sir. Okay. So tomorrow कल का जो lecture है वो 2 hours का ही रहेगा, and this will be from 8 to 10. Okay sir. Okay. Thank you everyone. Thank you sir.